हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में करेंगे STA301 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप हायर पिक्चर क्वालिटी अप्लाई करके मेरी वीडियो को क्लियर देख सकते हैं। एंड सेकेंडली ये कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 96% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। आप लोगों की सब्सक्राइब से हमारी सपोर्ट होती है। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट MCQ से हमारे पास द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन इज, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एज अ रूल ऑफ थंब व्हेन n is less than is equal to 30 then we can assume that dash is normally distributed, so A is the correct option, sampling distribution of sample mean. Next है हमारे पास which of the following is most important and most widely used method in point estimation, so B is the correct option, the method of maximum likelihood. Next है हमारे पास in sampling from a large population with 6 is equal to 35, the standard error of the mean is found to be 4. The size of the sample used is, so A is the correct option, 77. Next है हमारे पास as the sample size dash the variation of the sampling distribution of the same means dash, so A is the correct option. As the sample decreases, the variation of the sampling distribution of the same means decrease, कि अगर हमारे पास किसी सैंपल के साइज़ का रेट जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा तो उसकी वेरिएशन की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ मोमेंट्स पर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर। नेक्स्ट है हमारे पास a confidence interval has a specified probability dash of containing the true value of the parameter, so A is the correct option, A is equal to alpha. Next है हमारे पास the mean of the sampling distribution of x 1 minus x 2 denoted by x1 minus x2 is equal to the difference between respective the mean of the sampling distribution of x1 minus x2 denoted by x1 minus x2 is equal to the difference between respective, सो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सैम्पल मीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ वार T1 इज़ लेस देन वार इज़ ग्रेटर देन वार T2 वेयर T1 and T2 are two unbiased estimators then, so D is the correct option, T1 is more efficient. Next, if our sample population is normal, then sampling distribution of the sample mean will, so B is the correct option, normal. Next है हमारे पास when sample size is to be considered large population, standard deviation can be replaced by, so C is the correct option, sample standard deviation. Next है the standard error of the sampling distribution of P1 minus P2 is equal to, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने ये अच्छे से देख लेना है जो भी स्टेटमेंट आपके सामने आती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन जनरल द एस्टिमेटेड ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स आर डैश, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 22। नेक्स्ट है हमारे पास एज सैम्पल साइज गोज अप व्हाट ट्रेंड्स टू हैपन टू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दे बिकम मोर प्रिसाइज एंड नैरो। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोपोर्शन विल बी, so D is the correct option, 30 divided by 20. Next है हमारे पास consistency is a dash property, so B is the correct option, large sample. Next है हमारे पास an estimator is said to be dash if its expected value is equal to the true value of its parameter, so A is the correct option and biased. Next है हमारे पास method of moments पर estimation of parameters is based on the theory of, so B is the correct option, linear estimation. Next है हमारे पास in sampling without replacement FPC is used when, so n is less than 0.05 n, C is the correct option. Next है हमारे पास assume a large distribution in which 6 is equal to 6, what is the standard error of the mean based on samples for each n is equal to 10, so B is the correct option, 1.9. नेक्स्ट है हमारे पास the difference between the value of the statics and the value of the parameter is, so A is the correct option, sampling error. Next है हमारे पास when an interval is constructed what is the probability of occurrence of parameter in it, so A is the correct option, either 1 or 0. Next है हमारे पास if the sampled population has a normal distribution when is the sampling distribution of the sample
मीन आल्सो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ मोमेंट्स पर estimation of parameter is based on the theory of, so C is the correct option, जिसमें हमारे पास मेथड ऑफ मोमेंट्स होते हैं, एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स को, वो थ्योरी किस पे बेस्ड होती है, वो हमारे पास लीनियर भी होती है और नॉन लीनियर भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वांट्स टू डिटरमाइन द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स एन adult to assemble an essay to easy to assemble toy. A sample of 16 times yielded an average time of 19.92 minutes with a population standard deviation equal to 5.73. Assuming normality of assembly times, what is 95% confidence interval for the mean assembly time? So D is the correct option, 17.11 23 कॉमा 22.72 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन फॉर विच द मेन पैरामीटर ऑफ, so C is of interest is a population portion, सो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टू कंसीडर एवरी पॉसिबल वैल्यू दैट द पैरामीटर माइट हैव एंड फॉर ईच वैल्यू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी एंड दैट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन सैंपल इज ग्रेटेस्ट is choose as an estimate. This procedure is known as, so A is the correct option, the method of maximum likelihood. Next हमारे पास a consistent estimator will always be a, so B is the correct option, unbiased estimator. Next है the standard deviation of sampling distribution of portion is, so D is the correct option. Next हमारे पास if an estimator is more efficient than the other estimator, its shape of the sampling distribution will be, so A is the correct option, highly peaked. सो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।